transformation coach for this Ramadan and for your next 30 days. Ramadan Mubarak, and my name is Maryam Hameed and I'm from Pakistan. So you will be seeing me for these next 30 days talking on short topics so that we can understand that what actually Ramadan holds for us and how can we actually implement Ramadan even when it is finished. So today is day one, and anything which begins or starts holds important. So this very day, this day, it holds importance. Why? सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है ना, वो जब कोई चीज़ शुरू हो रही होती है, वो बहुत अहम जो किसी चीज़ का शुरू होना बहुत अहम किरदार अदा करता है. Why is that so? If you have anything in your mind, you can just comment that why is that so. Basically what happens is that when we enter this month, we enter this month with the feelings of anticipation and spiritual renewal. It's time where we want to purify our hearts and mind, and we want to feed our personal growth a lot, right? But most importantly, in all of these, in all of these goals, the most important thing is that having a strong connection or creating a strong bond with Allah Ta'ala. So इंसान रूहानी तौर पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर देता है. इसके अलावा एक इमोशंस होते हैं उसके, इस जज्बात होते हैं इस महीने के साथ कि ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म करना है. बट इन ऑल ऑफ दिस, इस सब में एक चीज़ या एक जो मेजर मकसद है, सबसे बड़ा मकसद है, वो क्या है? वो अल्लाह ताला से ताल्लुक़ का है. तो उस ताल्लुक़ को जोड़ना रमज़ान में हमारे लिए ज़्यादा पॉसिबल हो जाता है. ज़्यादा हम उसको अच्छे तरीके से उस ताल्लुक़ को हम निभा सकते हैं. सो basically today is the day where we set intentions, right? So day one is setting your intentions for the month ahead, and finally when you are over this month and you have been able to achieve those intentions, inshallah you will try to implement that, because all you are feeling after that is positivity in yourself, positivity in your behavior, positivity in your personal growth and personality. So everything gets positive and everything becomes so purposeful that you want to spend your whole life with a purpose. तो एक जिंदगी का मकसद नजर आता है रमजान में. तो उस मकसद को, ताकि आप पूरी जिंदगी ना छोड़ें या अगले आने वाले साल में मत छोड़ें, ठीक है? तो उसके लिए जो है, क्या कहते हैं हम, इंटेंशंस, जिसको हम नियत कहते हैं. तो आज का दिन बेसिकली जो पहला दिन था रमज़ान का, इट वाज जस्ट टू सेट आवर इंटेंशंस. हमारी नियतें, हमें अपनी नियत माननी थी. सो व्हेन आई टॉक अबाउट इंटेंशंस, व्हाट डू यू बेसिकली मीन? होती क्या है नियत? नियत इज़ बेसिकली, उर्दू में अगर हम इसको देखें तो नियत इरादे का नाम है, नियत ख्वाहिशों का नाम है. नियत में भी इसके अलावा ख्वाहिशों के अलावा कोई भी हसरत हो, ख्वाहिश और हसरत में थोड़ा सा ज़रूर फ़र्क होता है. तो इस तरह के जो तमाम अल्फाज हैं वो नियत में शामिल होते हैं. वाई? बिकॉज इन सब चीज़ों की जो बुनियाद है वो नियत से डलती है. अगर आपकी नियत है तो आप में ख्वाहिश बनती है, अगर आपकी नियत है तो ही आपका मकसद बनता है. तो in English we say that they are basically intentions. In simple word is
intangible goals, the goals that you cannot see at all. So, intangible goals, intangible hopes, intangible ideas, intangible plans, and anything which is intangible and unseen is basically it is all under intentions. So this is what intention is. So basically intention in short, if we put it short, intention is actually a way where you keep your ideas to yourself, keep your hopes to yourself in your mind. ऑलराइट, अभी उसको प्रोग्रेस नहीं मिली, अभी वो उन्होंने कोई अमली एक शेप इख्तियार नहीं की, ठीक है ना, अमली तौर पर वो नहीं आए. सो दिस इज व्हाट इंटेंशंस आर. सो नाउ द क्वेश्चन हियर इज, जिस वजह से हम आज यहाँ पर हैं, द मेजर क्वेश्चन ऑफ दिस डे इज के इंटेंशंस बेसिकली आपकी गाइडलाइंस होती हैं, ठीक है. These all words, goals, aims, मकसद, और यानी कि इस तरह के जितने भी अल्फाज होते हैं, this actually proves that and actually leads us. यही चीज़ है ना जो हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है. अगर मकसद होगा तो ही हम कोई हिम्मत पकड़ते हैं कुछ करने की. तो इंटेंशंस बेसिकली जो नीयत है वो आपकी गाइडलाइन बन जाती है. हाउ? अगर अब तक आपकी जो इंटेंशंस है, आपकी जो नीयत है वो आपकी गाइडलाइन नहीं बनी, सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस वेरी फर्स्ट डे. सो आई हैव just few steps for you. Number 1 is reflect on your goal. Reflect on your goal. So what do you mean by reflecting on your goal? So when we talk about reflection, putting reflection on your goal, आप खुद से सवाल करें कि फॉर एग्जाम्पल व्हाट डू यू वांट टू अचीव. एक बड़ा सिंपल सा सवाल है. अपने आप से खुद सवाल करें कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ, ज़िंदगी से क्या हासिल करना चाहता हूँ, अपनी फैमिली से क्या हासिल करना चाहता हूँ, मैं इस्लाम से क्या हासिल करना चाहता हूँ, बहैसियत मुसलमान में क्या चाहता हूँ. सो दीज क्वेश्चंस शेप योर वेरी फर्स्ट स्टेप. यहाँ से आपके गोल्स बनते हैं. लेकिन अगर उन गोल्स में कहीं भी मकसद अल्लाह से कनेक्शन का ना हो, तो यू वॉन्ट बी एबल टू बी एज सक्सेसफुल, राइट. मकसद क्या है? अल्लाह से ताल्लुक, द कनेक्शन विद अल्लाह, राइट. तो अगर वो ही नहीं है आपके गोल्स में, सो हाउ डू यू थिंक and how do you hope? So that already puts a big question on your intentions. All right. The next step is that from where are you taking inspiration from? Like, are you someone जो materialistic approach रखता है? Are you someone who is taking inspiration from anyone जिसके अपने goals में कनेक्शन विद अल्लाह कहीं आपको दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा, राइट. इसमें जजमेंट्स की बहुत से लोग अब ये भी कह सकते हैं कि मे बी इट्स अ जजमेंट. इट्स नॉट अ जजमेंट. intentions, actions are judged by your intentions, right? So whatever you are acting, it is being judged by your intention, right? So we can't say कि एक इंसान की नीयत का उस बिल्कुल परफेक्टली अंदाज़ा हमें नहीं हो सकता. दैट्स राइट कि हमें परफेक्टली अंदाज़ा नहीं हो सकता, लेकिन दैट डजेंट मीन कि अगर हमें एक चीज़ नज़र आ रही है, कोई बुराई नज़र आ रही है, तो वो बुराई ना हो. सो दैट्स व्हाट मैटर्स. सो बेसिकली यू हैव टू सी दैट वेयर यू आर टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम. अपने गोल सेटिंग के लिए wherever you are setting your aim or whenever you are setting your intentions, where are you taking inspiration from, right?
The third step is that you have to be very, very specific about it. अगर आपने लाइफ में कुछ वाकई अचीव करना है, if you really want to achieve a strong connection with Allah, just be specific about it and stick to it. कि मेरा जो मेरी नियत क्या है, your only niyat is to connect with Allah and just work on that, start working on that. इससे फायदा क्या होगा? If you stick to one, you will focus on one, you will concentrate on one, right? So it will be easier with such achievements. It will be easier to achieve your goals indirectly. Then another thing is, you can skip this method or this step which I am telling you next if you want to, but it's a good habit to write them. Whatever goals you are setting, you can write them out. Then another step is to break each goal into actionable steps. Break them, all right? Whatever achievements you want to make, for example, a connection with Allah की मैं आपको example देती हूँ, that how you are going to break them into actionable steps. It can be, you are going to pray more, right? It can be you are going to read Quran more. It can be you are going to understand the meaning of Quran more, right? It can be you are going to be close to nature. It can be to serve people in a good way. It can be, kindness towards people, just because Allah Ta'ala has ordered you, being basically हुकूकुल इबाद, अगर हम इसको उर्दू में बिल्कुल शॉर्ट करें तो हुकूकुल इबाद और हुकूकुल ला जो होते हैं, they actually put you into actionable steps if it's about connecting Allah. अगर अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ना होता है तो उसमें हुकूकुल इबाद तो बहुत आगे हैं और उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है. So you can start doing that. आप वो सबसे पहल आप उसी में कर सकते हैं, right? Then the last thing and the key point is to achieve all this, अपनी intentions को if you want कि वो आपको guide करें, then you have to be really, really realistic about your intentions. Never make those intentions जिनका basically you can't achieve at all, which are basically out of your hands. If you are hoping something which is out of your hands and which is out of your reach, so don't go for that. All right? So you have to, and secondly, you have to be really flexible. For example, by this I mean कि अगर for example आपका one of the जो actionable step है वो follow नहीं हो रहा, so you have to be flexible and you have to see the reason. You have to see the reason behind it, right? You have to see the reason behind it, that why your goal is not being achieved, why your intention which you wanted is not being achieved, right? So this is what you can go and see. You can go and recheck. So you can even recheck it by asking कि क्या मेरी जो ये ख्वाहिश थी वो realistic भी थी या नहीं थी. So these are the steps just to make intentions your guide. So let's step this Ramadan, this very first day, by setting our intentions. So that is it for today. Inshallah kal dobara mulaqat hogi with another topic with the second day of Ramadan. Allah Hafiz.